Hello and welcome back everyone. This video we're going to start with chapter 4 of listing regulation related to obligation of listed entity which has listed specific securities. So as per the last video, we are continuing with the next chapter here. So let me just get it started. एंड हाँ, आपके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम में अभी शॉर्टली इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको विजिबल हो जाएंगे, तो आप नोट्स अपने वहाँ से उठा सकते हो. Thank you for watching, and if you're watching the video for the first time, do like, share, comment and subscribe for the regular updates. Thank you. Starting off which we have today is chapter 4, which deals with listing regulations related to obligation of listed entity which has listed as specified securities. Okay. Now, moving on to which we have to start off with the first regulation, that is 15, that talks about the applicability. So, this regulations are related to obligation of the listed entity which has listed its specified security. Now, अब कहाँ कहाँ ये applicable होगा, that is described in regulation 15. अब रेगुलेशन 15 क्या कहता है कि ये जो लिस्ट ऑफ आइटम्स मैं अब लिखने जा रहा हूँ, उन जगहों पर ये सारे रेगुलेशंस अप्लाई होंगे. सारे कहाँ से कहाँ तक? ये बेसिकली ये जनरल रेगुलेशंस हैं जो आपके रेगुलेशन 15 से लेकर आपका रेगुलेशन 48 तक हम डिस्कस करेंगे. रेगुलेशन 15 से 48. तो वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, मैं देखूँगा अगर ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो मैं 2 हाफ में बांट दूंगा. स्टार्ट करते हैं. सो 15 के अकॉर्डिंग इट शैल अप्लाई टू द लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड any recognized stock exchange there for their specified securities. Applicability to any listed entity which has listed specified securities with recognized stock exchange either on main board, SME or institutional trading platform.
ओके, ये तो आपको पता चला एप्लीकेबिलिटी। अब रेगुलेशन 15 के अंडर ही आपको ये भी बताता है कि एप्लीकेबल कहाँ नहीं होगा। इसी के नीचे फर्दर हेड बना लेते हैं, नॉन नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, the compliance with the corporate governance provision as specified in regulation। अब कौन कौन से रेगुलेशन है उसका मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। स्टार्टिंग ऑफ रेगुलेशन 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 24 के साथ एक ऐसे कर लो, 24A, 24, 25, 26, 27 and the regulation 46, सब रेगुलेशन 2, और इस सब रेगुलेशन के क्लॉज B2 and para CDE of Schedule 5 shall not apply। तो पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, लिस्टेड एंटिटी जहाँ पे सारे रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, भले ही वो मेन बोर्ड एसएमई या आईटीपी पे रजिस्टर्ड हो, बट वहीं पे हम नॉन एप्लीकेबिलिटी की इसी रेगुलेशन में बात करते हैं जहाँ 17, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 है, 24, 25, 26, 27 रेगुलेशन, ये आपका 46 का सब रेगुलेशन 2 क्लॉज B2I, शेड्यूल 5 का पैरा CDE विल नॉट अप्लाई। अब कहाँ अप्लाई नहीं होगा, अब इसको हम करेंगे बाइफरकेट। अब बाइफरकेट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, लिस्टेड एंटिटी having below limits having below limits as on last day of previous फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब जो लिमिट्स दी गई हैं, पहली लिमिट है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल not exceeding 10 crore rupees and net worth
not exceeding 25 crore. Okay. In case by any chance, if any time listed company cross the limits, that such entity shall comply with the requirement of those regulations within the period of 6 months. सिंपल पे लिखते हैं, in case of breach of any breach of limits, as दोनों कंसिडर कर रहे हैं, in case of breach of any limits mentioned, listed entity to comply requirement of those regulation in 6 months जहाँ से ये लिमिट ब्रीच हुई है, फ्रॉम द डेट ऑफ the rate of which provision become applicable. ठीक है. इसके अलावा this as a whole साइट में छोटा सा नोट ले लो आप, not with standing anything contained in this entire regulation out here with regulation mentioned, Companies Act shall continue to apply wherever applicable. भी लिख देते हैं. ठीक है. और कहाँ कहाँ नॉन एप्लीकेबिलिटी है? नाउ listed entity which has listed specified securities on SME exchange. ठीक. तो ये है आपका 1, ये है आपका 2. कमिंग टू द लास्ट बिट 3. नाउ थर्ड कहता है लिस्टेड एंटिटी which are not companies. लिस्टेड एंटिटी, अगर आपने पहला वीडियो देखा तो लिस्टेड एंटिटी हमने डिस्क्राइब करा है, इट इज इन ब्रॉडर सेंस एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट, जस्ट नॉट द कंपनीज. तो लिस्टेड एंटिटी विच आर नॉट कंपनीज बट बॉडी कॉर्पोरेट or are subject to other provisions
listed entity which are not companies but body corporate, or are subject to provision as specified in regulation. इसमें कुछ गलत लग रहा है. Listed entity which are not companies but body corporate, or are subject to other. इसको यहाँ काट के ना, यहाँ पे आप प्रोविजन डाल दो, provisions as specified. इसको मैं मार्क कर रहा हूँ. You have to write as specified in the entire statement. ठीक है. As specified in 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, वही 46 का सब रेगुलेशन 2BI, शेड्यूल 5 का CDE shall apply to the extent that it does not violate their respective studies and guidelines or directives issued by regulatories. तो जल्दी से समराइज कर देता हूँ ताकि एक को आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए. So first thing first says applicability. When I talk about applicability, any listed entity who has listed their specified security with a recognized stock exchange, either on main board, SME or institutional trading platform, वहाँ पे हर जगह ये regulations apply होंगे. All of the above. Now कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होंगे. सो और क्या क्या अप्लाई नहीं होगा पहले हम देखते हैं क्या क्या अप्लाई नहीं होगा. सो एनीथिंग फ्रॉम 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27 and regulation 46 sub regulation 2 clause B2I on schedule 5 का para CDE shall not apply. To apply to what? Listed entity having a limitation, having the limits where its paid up capital is less or equal to 1 crore. Basically it's not exceeding. Also whose net worth is not exceeding 25 crores. यानी कि इन दोनों की लिमिट विद इन होनी चाहिए. इनमें से अगर एक भी एक्सीड करेगी तो उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों को ही एक्सीड करना पड़ेगा. ना इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी लिमिट्स, अगर किसी भी वजह से ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट 10 की 11 हो गई और 25 की 26 हो गई, तो 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होने चाहिए सारे एप्लीकेबल होंगे. कहाँ से? जिस दिन से ये ब्रीच स्टार्ट हुआ है. साथ ही साथ इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर हैज बीन मेंशन, कंपनीज एक्ट जहाँ तक एप्लीकेबल है वहाँ तक एप्लीकेबल रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैज बीन stated here. Apart from that, these shall not apply to the listed entity who has listed their securities on SME exchange just for the purpose of these regulation. Third point ये कहता है which are not companies, listed entities which are not company but body corporate या किसी स्पेशल अलग से किसी स्टैट्यूट या किसी लॉ में गवर्न होती हैं. तो ये सारे रेगुलेशन उस एक्सटेंट तक अप्लाई होंगे जिस एक्सटेंट तक उनके जो एक्चुअल लॉज, जो ये जो प्रोविजंस या रिकमेंडेशन जो उनके स्पेसिफिक रेगुलेटरी से दी गई हैं वो ब्रीच ना हो. एप्लीकेबल होंगे बट इस तरीके से कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करें.